Good afternoon, students. My name is Hemlata Ma'am, and I'm your teacher. And we are going to discuss today about the cell, the basic unit of life. I'm going to share the screen with you, and will explain the PowerPoint. You know that cell is the basic unit because every living organism is made of cells. The basic unit of life, cell, it is proposed by Theodore and Mathis Sheldon and Theodore Swan. They have given the cell theory. The cell theory is proposed by Mathis Sheldon and Theodore Swan, and it gives the statement is that all the living organisms are composed of cells. This is the first statement of cell theory. Two scientists have given, Mathis Sheldon and Theodore Swan has given the cell theory. And its statement is that every living organism is, whether it is a plant or animal or a microorganism, everything will be made of cells. All the cells arises from pre-existing cells. Means new cells come from pre-existing cells. Types of cells on the basis of nucleus, present or absent. The cells are of two types. You know that the prokaryotic cells are the bacterial cells in which the nucleus is not present. And they are having the nucleoid region instead of their nucleus. They are specific fixed rod-shaped bacteria, and their circular chromosome is lying in the center. Double-stranded chromosome is lying in the center without any proper boundary. So this region, central region, is called as nucleoid. And nucleoid is present and the membrane bound nucleus organelle is not present. Eukaryotic cells, whereas, are basically other four kingdoms which we read, other than Monera, which is Protista, fungi, plant animalia. So they are plant cells which are fixed shape and due to their cell wall, and they have a nucleus in the corner, and it is a double membrane bound organelle with the DNA which is present inside it, and as a thread. And the animal cell will be smooth round structure, and it will having the central nucleus, and inside the nucleus only the DNA will be present. So this is the type of the eukaryotic cells which have nucleus. सेल्स न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जो न्यूक्लियस होता है तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. Prokaryotic cell include bacteria, blue-green algae, mycoplasma. Presence of plasmids in bacteria. Lack of nuclear membrane, cell organelle, presence of ribosomes, mesosomes. These are also the structures which is present in the prokaryotic cells. So prokaryotic cells do not have nucleus, but they have the plasmid. Plasmid is the independent and autonomously replicating DNA molecule, circular DNA molecule present in additional to the chromosome. So बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड तो रहता ही है, सेल वॉल भी रहती है बैक्टीरिया के अंदर, डबल मेम्ब्रेन बना दिया हमने, और न्यूक्लियोइड रीजन में सेंटर में उसका क्रोमोसोम रहता है जैसे कि हमने पढ़ा, एंड उसके साइड में एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, और वो स्पेशल जीन्स प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, उसके अंदर राइबोसोम्स भी रहते हैं एंड मीसोसोम्स. सेल एनवलप. अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो इन सेल्स में एनवलप भी होती है, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल, इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, मिडल में इनका सेल वॉल होता है.
तो बैक्टीरिया में there is outermost structure which is glycocalyx, which is of two types. Maybe if it is very tough, then it is called a capsule made of polysaccharide. So capsule is there, and other form is loose sheath of proteinaceous substance called a slime layer. So when the glycocalyx is very tough, then it is called capsule, and when it is loose sheath attached to the outer cell wall, then it is called the slime layer. Innermost is the plasma membrane. Middle is the cell wall. Animal cell structure. जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते हैं, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेली होती हैं. Unlike the eukaryotic cell, plants and fungi, animal cells do not have a cell wall. एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती. ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तीन तरह के ट्रांसपोर्ट कराती है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. Centrioles are the self-replicating organelles made up of 9 bundles of microtubules are found in the animal cells. They help in the cell division process. Centrioles form the basic body of the cells or the flagella and the spindle fibers. Cilia and the flagella are essential for the locomotion of individual. तो बहुत सारे सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि प्रोटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उनका सेल जो हमें दिखता है. यूग्लिना की अगर हम बात करें तो, और भी और सेल्स की बात करें तो एक लंबा फ्लैजिला उनमें होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है. ट्रैपेनोसोम की बात करें तो देयर आल्सो दे आर हैविंग द टू फ्लैजिला. वन दे आर acting flagella are acting as the motile, giving the ability to move. Function is to movement of fluids and matter. वही सीलिया जो होता है, फ्लैजिला तो लंबा स्ट्रक्चर होता है, बट सीलिया जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं टाइनी हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्लीपर शेप्ड पैरामीशियम में चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा बाउंड्री से निकले हुए बहुत ज्यादा फाइन हेयर जैसे स्ट्रक्चर पास पास होते हैं. पूरा पैरामीशियम इस पे कवर होता है. अनियनसीलिया का काम होता है मूवमेंट कराना फ्लूइड की और इनकी ऑर्गेनिज्म की, सो दैट ये फूड मटेरियल्स, फ्लूइड के मटेरियल्स पास कर सके. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है सैक बैग जैसे स्ट्रक्चर का, दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड ट्रांसपोर्ट केमिकल कंपाउंड्स, जो ट्रांसपोर्ट करवाती हैं केमिकल सब्सटेंसेस को, कंपाउंड्स को, फॉर द यूज ऑफ इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल्स. सेल्स के अंदर लाने के लिए, सेल्स के बाहर ले जाने के लिए. गोल्जी apparatus distribution and shipping department for the cells chemical products. गोल्जी apparatus पैकिंग और ट्रांसपोर्ट करने वाले ऑर्गेनेली हैं. इनका काम पैक करना और प्रॉपर एड्रेस पे आप भेजना है केमिकल प्रोडक्ट्स को. जो तरह तरह की ऑर्गेनेली जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं उनको सही जगह पे भेजना गोल्जी apparatus का काम होता है. Modifies protein and fats built in the endoplasmic reticulum and prepares them for exports to outside the cell. मॉडिफाई भी करती है प्रोटीन्स को, गोल्जी apparatus और फैट्स को भी मॉडिफाई करती है. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन्स बनाए थे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो लिपिड्स बनाए थे उनको मॉडिफाई करती है गोल्जी apparatus एंड प्रिपेयर करती है एक्सपोर्ट के लिए, बाहर के सेल्स में भेजने के लिए. लाइसोसोम्स मेनली फंक्शन लाइसोसोम का डाइजेशन होता है. कोई भी स्ट्रक्चर लाइसोसोम के से अगर फ्यूज हो गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. Microfilaments are the solid rods made of globular proteins called actins. माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर सेल के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं. सेल के साइटोप्लाज्म में फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, ट्यूबुलिन के, जो आपस में सेल को थोड़ा सा शेप देते हैं.
उनका काम है सेल को शेप मेंटेन करना, उस सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं जो कि स्केलेटल बनाते हैं, साइटोस्केलेटल बनाते हैं। मतलब सेल के अंदर भी एक स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन के फाइबर्स। Microtubules, these are the straight hollow cylinders, are found throughout the cytoplasm of all eukaryotic cells. Prokaryotes do not have them and carry out a variety of functions ranging from transport to structural support. Microtubules straight hollow cylinders होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोस्केलेटल के ही कंपोनेंट हैं। वहाँ माइक्रोफिलामेंट्स था, यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्योंकि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। बहुत वेराइटी फंक्शन की कैरी आउट करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू स्ट्रक्चरल सपोर्ट। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में दे आर मेन पावर जनरेटिंग, कन्वर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनली है जो ऑक्सीजन जनरेट कराती है, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी में कन्वर्ट करवाती है। न्यूक्लियस सर्व करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है सेल का। पूरे सेल को कमांड करता है न्यूक्लियस। एंड इट स्टोर द सेल्स हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए को store। So we were discussing about the mitochondria, and also we have discussed the nucleus, that it is storing the hereditary material and it coordinates the cell activity, which include growth and intermediary metabolism, protein synthesis, reproduction. Peroxisomes are the single membrane bound bodies containing catalase enzyme. तो peroxisome एक ऐसी ऑर्गेनली है जो